These are 7 sections, individual pieces by themselves, but in a way connected, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो कुछ भी इस जीवन में कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, और हम उसको बेहतर बना सकें इसके लिए बहुत जरूरी है थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस हम डेवलप करें, और उस सेल्फ अवेयरनेस का परिष्कार समय के साथ साथ करते चलें। तो उसी कड़ी में द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लाइफ चेंजिंग वेबिनार इज लाइफ प्लग इन। इतने सारे सवाल हम लोग लें, उन सब का जवाब अपने मन में अपने आप को ईमानदारी से देते रहें, क्योंकि जीवन का रूपांतरण तभी संभव है जब आप अपने आप से एटलीस्ट 100% ईमानदार है। तो वो ईमानदारी जिंदगी में हमेशा बहुत जरूरी होती है। फाइन। So the first things first, we are going to be discussing about life plugin. We are going to be plugging into life. We'll be going bilingual. I'll be talking in English as well as Hindi. And as I told you, there are 3 ground rules for this particular webinar that we have. One, no questions. You can keep a page aside, which you can call as the parking lot. So in the parking lot, whatever questions you have, you just park it down there, write it down, make a note of it, and towards the end of the webinar, we'll open it up for Q&A. That time, you can all pitch in your questions. That's first. Second, sit at a secluded space where you are not too much disturbed by people around. So it's quintessential you find a sweet spot in your home that is comfortable and at the same time keeps you undisturbed by people around. And thirdly, go grab a pen and a notepad or a journal for yourself and make a lot of notes. Honestly, write down the answers to most of the questions that I'll be asking you. Of course, some of them might not necessarily apply to all of you, but it's essential as much as you can write honestly, because no one's going to check these answers. So you write down the answers to those particular questions. All right. So first things first, as I said, first, let us plug in into life. Let us gain a bit of self-awareness where we can actually launch ourselves. So let's first get to the launch pad. And this is where life plugin gets in handy. So we are talking about life plugin. See, living is not about filling up the day. Living is about doing things that will help you become what you want to become. So life is not always about being a go-getter. It's not always about being too productive or being a phenomenal achiever in life. It's not about being busy all the time. That busyness has to go aside. What living actually is about doing things that will help you become what you really want to become. Living is about flourishing, about blooming. तो कुछ अच्छा बनना है और किसी अच्छे रूप में हमको खुद को ढालना है, ये जीवन जीना है, ना कि ये कि हम दिन भर कुछ ना कुछ करते रहे एंड we keep ourselves busy all the time. That is not what living is. This workshop and webinar is not about you being ultra productive, you being a goal getter. This is about realizing that living is about doing things that will help you become a little better than what you are today, that will help you become what you want to become. That is precisely what living is. And let me tell you at the very onset, you are just an awakening away from legendary possibilities in your life. So it's very essential you keep yourself willing and open at all times. You being receptive, you being willing, you being open is the first and foremost thing for you to grab the maximum out of this particular webinar. So for those of you who are joining in first time, hello, my name is Dr. Pradyumna Singh. I'm a allopathic or a modern medicine practitioner turned life coach who's on a mission to help people unleash their truest potential in all walks of life. And the reason why I'm doing this particular webinar is for you to be able to catapult your success, and success not just in terms of monetary achievements, success not just in terms of you being able to achieve a lot in life, but success in terms of you living a full-fledged life, you experiencing life to the fullest. And for this, the ground rules are clear. Go grab a pen and a paper or a notebook. Be seated in a comfortable position where you are not disturbed by too many people around. And it's very essential,
that you keep a glass of water and something to eat. If you are someone who likes munching every now and then, keep something to eat beside you, maybe a box of dry fruits or something, and enjoy for the next 2 hours, completely engrossed in the processes. My expectations from you are just this, that you keep yourself willing and you are honest. That's it. Nothing else from my side. From your part, what I'd rather tell you to expect is a lot of bashing, a lot of hard hitting truths, a lot of bombardment of things that might not necessarily be pleasing to you. But after all growth happens outside your comfort zone. So we have to keep it in mind. This growth, this process is going to be uncomfortable. It's going to be something that is not very pleasing. There might be a lot of pain involved, physical, mental, or otherwise. But if we go through these 2.5 hours properly, what it will do is enable us and empower us to literally skyrocket our success. It will act as a launch pad. These are questions, 5 questions, which you have to answer for yourself. Am I living my own story? See, you got to answer this. Are you writing your own story in life, or is it someone else who's penning the script? क्या मैं अपना जीवन अपने हिसाब से जी रहा हूँ, जैसा मैंने सोचा था, या फिर किसी और की उम्मीदों का बोझ ढो रहा हूँ, कुछ और जिम्मेदारियों के हिसाब से अपने जीवन में चल रहा हूँ? ये एक सवाल है जिसका उत्तर आपको अपने लिए देना है. Am I living my own story? Yes or no? No matter what the situations, forget about because. ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि, उस क्योंकि को साइड में पार्क कर दो. फॉर नाउ बी ऑनेस्ट. एम आई लिविंग माई ओन स्टोरी? Is it you who's writing the script of your life, or is it someone else who's writing and literally forcing you to act the way he or she wants? Number two, when all is said and done, what will I have done more than I have said? Am I one step ahead of the promises that I make to myself? Think about it. जब सब कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? मतलब मैंने जितना अपने आप से प्रॉमिस किया है, जितना मैंने अपने आप से वादा किया है, क्या मैं उसको ओवर डिलीवर कर रहा हूँ, या फिर जितने मैंने बात बोली है मैं अपने अपनी बात पर भी खरा नहीं उतर पा रहा? ईमानदारी से अपने लिए इस बात का चिंतन करें, मनन करें और लिखें कि व्हाट विल आई हैव डन मोर देन आई सेड. मैंने बोला था ये पर्टिकुलर काम मैं 10 दिन में कर लूंगा, बट मैं उसको 7 दिन में कर पा रहा हूँ, या मैं उसको 10 दिन में भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ. टेक इट एज एन एग्जाम्पल एंड राइट इट फॉर योर सेल्फ. Are you over delivering on the promises that you are making to yourself, या फिर आप जितना अपने आप से बोल रहे हैं, जितना अपने आप से सोच रहे हैं कि मैं ऐसा कर लूंगा, उतना भी नहीं कर पा रहे? ईमानदारी से इन सवालों का जवाब दें, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर लाइक द फाउंडेशन फॉर दिस एंटायर सेशन. जितने ईमानदार आप होंगे, उतना ज्यादा इस सेशन से बेनिफिट आपको मिलने वाला है. नंबर 3, एम आई रिस्पेक्टिंग टाइम? क्या मैं समय की कीमत जानता हूँ, पहचानता हूँ और मानता हूँ? So what is something that I've been passionate about for so long, and how would I choose to occupy myself and spend my time? वो क्या ऐसी चीजें हैं जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ, बिल्कुल शिद्दत से मैं वो चीजें करना चाहता हूँ बहुत लंबे समय से, एंड अगर मौका मिले तो मैं उसको कैसे करूंगा? मैं कैसे अपने दिन में से समय निकालूंगा, या मैं कैसे अपने आप को उन चीजों को करने में ऑक्यूपाइड रखूंगा थ्रू आउट द डे? तो यहाँ पर एक तरीके से सवाल आपके टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है. Are you really respecting the time that you have, or you are just wasting it? You are just going with the flow. हर व्यक्ति के पास जीवन में 24 घंटे होते हैं. Everyone has 24 hours. The question is how you utilize those 24 hours. So write it down for yourself. Am I respecting time? And what is something that I have been passionate about for so long? How would I choose to occupy myself and spend my time? Write down the answers to these questions. So we talked a little about, are we over delivering on the promises? मतलब अपनी बात की वैल्यू है कि नहीं है जीवन में. We also talked about respecting time, time management के बारे में थोड़ी बात करी. अब बात करते हैं हिम्मत, ताकत, courage के बारे में. Am I brave enough to break some rules I have made for myself? Write it down. Am I brave enough to break some rules that I've made for myself? And what are the priorities that should guide my actions? What are those priorities?
तो पहला सवाल तो ये कि क्या मुझ में इतनी हिम्मत है कि जो रूल्स मैंने अपने लिए बनाए थे जिंदगी में किसी मोड़ पर, वो मैं अब तोड़ सकूं ताकि मैं अपनी सफलता के मार्ग में और तेजी से आगे बढ़ सकूं? क्या मुझ में वो ताकत और हिम्मत है? और अब इस समय जीवन में क्या वो प्रायोरिटीज हैं जिनके हिसाब से मुझे जीवन जीना चाहिए, जिसके हिसाब से मुझे आगे के कार्य करने चाहिए? जस्ट थिंक अबाउट इट एंड राइट इट फॉर योरसेल्फ. Am I brave enough to break some rules I have made for myself? And what are the priorities that should guide my actions? What am I willing to do that most people won't be willing to do? Here you think of your sacrifices and struggles. वो क्या ऐसी चीजें हैं जो ज्यादातर लोग नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, जो कि मैं करने के लिए अपने आप को सक्षम मानता हूं, या एटलीस्ट सक्षम नहीं भी हूं तो एटलीस्ट विलिंग हूं कि हाँ मैं वो करूंगा। हर कोई उसेन बोल्ट की तरह 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, पर कितने लोग हैं जो उसेन बोल्ट की तरह वो मेहनत करना चाहते हैं? सो थिंक ऑफ योर सैक्रिफाइसेस एंड स्ट्रगल्स। जिंदगी में जो भी कीमतें आपको चुकानी पड़ी इन द फॉर्म ऑफ आपके सैक्रिफाइस, आपके स्ट्रगल्स, आपकी मेहनत, आपकी हिम्मत, आपकी लगन, उस सब के बारे में सोचें और ईमानदारी से अपने आप को जवाब दें, व्हाट एम आई विलिंग टू डू दैट मोस्ट पीपल वोंट बी विलिंग टू डू? क्या वो ऐसी चीज है जो मैं करने के लिए तैयार हूँ, और वो चीज जो कि ज्यादातर लोग नहीं करना चाहते या करने के लिए तैयार नहीं? राइट इट डाउन फॉर योरसेल्फ। एंड विद दिस सेड एंड डन, वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट। तो हम लोगों ने अभी एक तरीके से अपना प्लग सॉकेट में डाल दिया है और स्विच ऑन कर दिया है। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट, दैट वाज लाइफ प्लग इन। नाउ द सेकंड पार्ट इज लाइफ पास।